So, good morning everyone. So, today we are going to discuss about the hierarchical clustering. Okay, so before going to the clustering, we should know about unsupervised machine learning algorithm. What is it? Because it is an unsupervised machine learning algorithm. Okay, and what is unsupervised? Let me write it. Unsupervised machine learning algorithm. So, what it is? इसमें क्या? There is no output. There is no output. That is unsupervised. Simple. There is no output, so that is known as unsupervised, or it can be said no labeled output. In many books, it is written labeled output. Okay, no labeled output. You can say. So what it is? Then when there is no output, there is no labeled output. Then what it is? It is only data. It is only data. Only data. And what we'll do with the data? We have to find. We have to find hidden pattern or structure. We have to find hidden pattern or structure. Data is here and we have to find what? Hidden pattern or structure. That is what I want to do. And we can do only through this data. Through this data, we can find the hidden pattern or data. Now, main goals of unsupervised learning. Main goals. Main goals of unsupervised learning. Okay, number one is clustering. That will be learning. Okay, we are clustering. इसमें क्या होता है? What happens? We group similar data items. We group similar data items. We group similar data items. तो ये clustering with the things we learn. Number one is first is you can say hierarchical clustering. Hierarchical clustering. Hierarchical clustering. Okay. Number two is density based clustering. DB-scan. Density based clustering. We will learn all these things. Okay. One is k-means. One is k-means. Number four is optics. This is also very important. Here we will identify the hidden structure. Identify the clustering structure. यही करेंगे, सिर्फ स्ट्रक्चर निकालेंगे. इसमें क्या करें? स्ट्रक्चर. आइडेंटिफाई द क्लस्टरिंग स्ट्रक्चर. वी ओनली फाइंड द स्ट्रक्चर इन ऑप्टिक्स. और यहाँ पे क्या होंगे? वी विल डू द क्लस्टरिंग. वी विल डू क्लस्टरिंग. Okay, so these things we will be doing. Okay, these are the clustering things, and then we will be doing one more thing, and that is known as number two, association rule learning. Association rule learning. It's very important. Association rule learning. Now, what is there in the association rule learning? Here means suppose you bought a mobile. You bought a mobile. So they will be saying that buy a mobile cover. Those who bought this mobile, they also bought this cover. So this type of learning, these things also will be learning over here. Association rule learning. यहाँ पे कौन सा यहाँ पे means what we will do? We will identify. You can say we can identify relationships. Relationships between variables. Identify relationship between variables. Identify relationships between variables. That is what I in large data set. Suppose you are buying a TV. तो वहाँ पे ऑनलाइन में they will ask for a speaker also, for a good quality sound. That also they will be referring. So these are all associated learning. Here we will be learning FID algorithm. Is very important, and one is ECLAP.
Okay, one is eclat. So these are the things. Third, these are all the means goals of unsupervised learning. Okay, first is clustering, second is assisted learning, third is you can say dimension reduction. Dimension reduction. What we will do? Dimension reduction is reducing the number of features. Reducing the number of features. Okay, कुछ फीचर्स की जरूरत नहीं होते. एग्जांपल ले लो, नेम, it will be number, class, then they are going to ask about the mobile number, then they are asking about the you can say mobile number 1, mobile number 2, two mobile number, they are asking about two mobile numbers, mobile number. ठीक है. Now what they can do, इतनी सारे variables है, so many features, name is important, enrollment is number, class is mobile number, both the mobile numbers are not, they can discard this one. Okay, they can discard, ये दो mobile number की जरूरत नहीं, एक ही mobile number में हो जाएंगे. Understood? They can discard this feature. Okay, this is what I am saying. Or you can say one more feature is the grandfather's name. Grandfather's name एक फीचर दिया हुआ, इस फीचर की भी जरूरत नहीं है. तो इन दिस वे if we reduce the features, we cut down the feature, that is what known as dimension reduction. Here we will be learning PCA, principal component analysis. Principal component analysis. So we will be learning all this. Okay, so first what we are going to learn, we will be learning hierarchical clustering. So without any, now what is hierarchical? Can you see the picture over here? What you are saying? Okay, this is the boss. Okay, under him there are three branches. This one the first branch, this one is the second branch, this is the third branch. First branch में दो hierarchy है, यहाँ पे भी दो hierarchy, इधर भी दो hierarchy है. So this is hierarchy. Example, if you want to know the example, suppose एक organization है, वहाँ पे एक accounts department है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, एक मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है. ओके, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, ये अकाउंट डिपार्टमेंट में एक तो बंदा होगा नहीं, बहुत सारा बंदा होगा, तो दे फॉर्म ए क्लस्टर. अकाउंट डिपार्टमेंट फॉर्म्स ए क्लस्टर, एक बंदा नहीं बहुत सारा बंदा है. मैनेजमेंट डिपार्टमेंट फॉर्म्स अनदर क्लस्टर, बहुत सारा बंदा है, एक बंदा नहीं है बहुत सारा बंदा है. ना उसके ऊपर में सपोज मैनेजिंग डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर, तो क्या हो रहे हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर का, दिस इज द होल क्लस्टर. ओके, पहले हम क्या करें, छोटे छोटे क्लस्टर बना रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे क्लस्टर, एंड देन वी आर मेकिंग अ बिग क्लस्टर एंड इट फॉर्म्स ए ह्यूज क्लस्टर. दिस इज व्हाट वी डू इन क्लस्टरिंग, दिस हायरार्किकल क्लस्टरिंग. होप आप लोगों को समझ में आ गया. दिस इज व्हाट वी विल बी डूइंग. ओके, नाउ व्हाट आई विल डू, now without further delay, we can start with the hierarchical clustering. Okay, it's a very important clustering algorithm. One sec. Now we can start the hierarchical clustering. Hierarchical clustering में पहले क्या करेंगे, first and the most important thing that we will be doing, ये जो चीज है, ये जो डायग्राम मैंने बनाया, ये जो डायग्राम्स है, ये डायग्राम, दिस वन इज नोन एज डेंडोग्राम. इसमें क्या होता है, डेंडोग्राम. ओके, दिस इज डेंडोग्राम. नाउ यहां पे क्या होते हैं, हायरार्किकल क्लस्टरिंग में क्या होते हैं, हायरार्किकल होते क्या, an iterative process, an iterative process that merges the closest clusters until all points are on a single
क्लस्टर, लास्ट में सिंगल क्लस्टर बनेगा, ठीक है, एंड दैट विल बी शोइंग विद द हेल्प ऑफ अ डेंडोग्राम. अब डेंडोग्राम क्या है, दैट विल बी डिस्कसिंग अबाउट इट with the help of an example. Now we can take an example. Now let's take an example. Now take an example. Suppose 4 points are there: A, B, C, D. Here also you can write A, B, C and D. Hope it's clear. Okay. Now A to A it is 0, B to B it is 0, C to C it is 0, D to D it is 0. The distance is 0. We have to find out the distance. Okay. The distance is 0. Okay. Now A to B is 2, A to C is 6, A to D is 10. Okay. I am taking the example. B to A is 2, B to A is 2, B to C is 5 and B to D is 9. Now I am going to take C to A is 6, C to A is 6, C to B is 5 and C to D is 4. Now what I do, D to A. D to A is 10, D to B is 9, D to C is 4. Okay, so this is the table. This is the example I have taken. I have taken a small data set and I am going to solve it. Hope आप लोग clear है. First and the most important thing is that step 1. Step 1. What we will do in step 1? We treat each data point as a single cluster, as a single cluster. Now what we can say, start with each data point as its own cluster, as its own cluster. What I mean to say, clusters. क्या क्या क्लस्टर बन रहे हैं? एक हो गया ए क्लस्टर, हो गया खुद क्लस्टर है, बी एक खुद क्लस्टर हो गया, एक सी क्लस्टर है और एक डी क्लस्टर है. 4 क्लस्टर मेरा बन गया. ठीक है, ये एक डेटा पॉइंट को एक एक क्लस्टर बना दिया. होप आप लोग क्लियर है. स्टेप 2. Now what we'll do, I will examine the distance of the closest pair. देखो क्या है, A to B क्या है, 2, 0 we are not going to take. A to A 0 is nothing. Okay, A to B is 2. The which one is the smallest? I can say this one is the smallest. A to B. So A to B is the smallest, closest pair. The distance between A comma B is 2 units and it is the closest pair, क्योंकि ये सबसे छोटा है and it's the closest pair. तो इसको मैं क्या करूंगा, सिंगल क्लस्टर बना दूंगा. A comma B एक क्लस्टर बन गया. होप आप लोग क्लियर है. ओके, अब A comma B तो एक क्लस्टर बन गया है. स्टेप 3. अब A comma B जो क्लस्टर है, A comma B, what I will write distance between. तो क्लस्टर्स क्या क्या बना, पहले क्लस्टर्स क्या क्या है, द न्यू क्लस्टर्स. लेट मी राइट इट, द न्यू क्लस्टर्स क्या क्या है, ए और बी एक क्लस्टर बन चुका है, कॉमा सी एक खुद क्लस्टर है, एक डी क्लस्टर है. ये 3 क्लस्टर है अभी. ओके, आप क्या करेंगे, सी, ए बी और सी का मैं डिस्टेंस देखूंगा. डिस्टेंस बिटवीन ए कॉमा बी कॉमा सी, ये दोनों का डिस्टेंस देखेंगे. डिस्टेंस बिटवीन ए बी कॉमा सी, ये दोनों का डिस्टेंस देखेंगे. जैसे यहाँ पे क्या देख रहे थे,
ए और बी का डिस्टेंस, तो क्या हो गया टी, 2 हो गया। तो ए बी अब तो एक सिंगल क्लस्टर हो गया, सिंगल क्लस्टर, और ए सी है, ठीक है। मिनिमम अब आई विल सी मिनिमम डिस्टेंस, यू कैन से मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी। नाउ व्हाट इट विल हैपन, व्हिच इज इक्वल टू ए और सी का डिस्टेंस निकालो, मीन ऑफ ए कॉमा सी और बी कॉमा सी। अब मैंने क्या किया, जिस ए का साथ सी का कर दिया और बी का साथ सी का कर दिया, तो ए सी और बी सी इक्वल टू मीन ऑफ ए और सी का डिस्टेंस क्या है, लेट अस सी, ए एंड सी का डिस्टेंस क्या है, 6, राइट इट 6। और क्या था, बी और सी का डिस्टेंस क्या है, बी और सी का डिस्टेंस है 5, 6,5। तो व्हाट विल बी द वैल्यू, इट विल बी 5। होप इतना क्लियर हो गया। सिमिलरली वी विल फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए कॉमा बी एंड डी, ए कॉमा बी एंड डी इक्वल टू मीन ऑफ, क्या हो गया, ए कॉमा डी, ए डी और बी डी, मीन ऑफ ए डी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए डी, ए से डी देखो एक बार चेक करो, ए से डी है 10, राइट 10, कॉमा बी से डी क्या है, बी से डी इज 9, राइट 9। तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू इज 9। होप इतना क्लियर हो गया। नाउ व्हाट विल डू, वी विल कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, we will construct a matrix of the form, क्या हो गया, एक ए बी का है खुद, ए बी, यहां पे सी है, यहां पे डी है। सिमिलरली यहां पे ए बी तो एक क्लस्टर है ना, यहां पे सी है, यहां पे डी है। ए बी में 0 है, सी में 0 और ये डी है, दिस वन इज डी, ओके, डी में 0, इतना ठीक है। ए बी और सी में क्या डिस्टेंस है, ए बी एंड सी, दिस वन इज द डिस्टेंस, दिस वन इज द डिस्टेंस। ए बी सी का क्या डिस्टेंस है, 5, तो राइट 5। ए बी और डी का क्या डिस्टेंस है, ए बी एंड डी का 9, राइट 9। नाउ सी एंड ए बी इज 5, सी एंड डी इज हाउ मच, सी एंड डी इज 4, then D and AB is 9, D and C. Now let us see the D and C, it is 4, right, 4. Now we will see the minimum value is how much, minimum value is 4, okay, means C और D का डिस्टेंस क्या है, C comma D forms the closest pair of 4 units. Therefore CD is another cluster. Okay, CD is the new cluster, Therefore the updated cluster क्या हो गया, ए कॉमा बी एक क्लस्टर बन गया और सी कॉमा डी इज अनदर क्लस्टर। ओके, दीज आर द 2 क्लस्टर्स। होप आप लोग क्लियर है, सी कॉमा डी इज अनदर क्लस्टर। नाउ व्हाट विल डू, नाउ आई विल फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी, दीज 2 क्लस्टर्स, ये दोनों क्लस्टर के बीच में हमें डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। स्टेप 3 और 2 व्हाट आई हैव रिटन, स्टेप 3 आई हैव रिटन, स्टेप 4 find the distance between the clusters A comma B and C comma D. So what I will write, which is equal to mean of
मीन डिस्टेंस डिस्ट लिखो, डिस्टेंस डिस्ट लिख दिए, ए कॉमा बी और सी कॉमा डी, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे हम, ठीक है। तो व्हाट विल हैपन, वी कैन राइट, पहले लिखूंगा ए बी का साथ ए का साथ सी, एक पेयर ले, ए का साथ सी, ए का साथ डी, ए सी ए डी, ए का साथ सी, ए का डी, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ए का साथ सी, ए का साथ डी, फिर बी का साथ सी, बी का साथ डी, डी का साथ सी, बी के साथ डी, okay. Now we will find a का साथ c, what is the value, let us see a to c, a to c is how much, 6, right, 6, a to c is 6, then a to d is 10, check it, a to d is 10, तो उसके बाद क्या आएगा, 10, 5 और 9, ये सारे आएंगे। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या हो गया, मीन कितना हो गया, मीन हो गया 5, तो विच इज इक्वल टू 5, तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी इज 5, ओके। अब तो क्लस्टर्स तो दोनों बन चुके हैं, अब क्या हुआ, व्हाट आई विल डू स्टेप 5 में, डिस्टेंस वी हैव गॉट इट, तो स्टेप 5 we create the dendrogram, we create the dendrogram, we create the dendrogram, okay. How to create the dendrogram, we will see। पहले मैंने क्लस्टर क्या बनाया था, ए बी, ठीक है, ए बी, और ए बी का डिस्टेंस कितना था, 2 यूनिट्स, तो राइट ए बी, दोनों का डिस्टेंस कितना था, 2 यूनिट्स, ओके। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ द सी डी, सी डी इज ऑल्सो वन क्लस्टर, सी डी, और दोनों का डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इज 4 यूनिट्स, लेट्स से 4 यूनिट्स, दिस 4, ओके, राइट 4, देन ए बी और सी डी का डिस्टेंस कितने हैं, ए बी और सी डी का डिस्टेंस है 5 यूनिट्स, तो दिस इज द डेंडोग्राम, दिस इज द डेंडोग्राम, this is how we create the dendrogram, okay, and this is how we do the hierarchical clustering। hope आप लोगों को clear हो गया, it's a simple method and it's a simple technique। आप लोगों को यदि कोई भी confusion, anything you have, you please comment on the comment section, I am going to resolve। this is the simplest way to demonstrate demonstrate the hierarchical clustering, and that I have demonstrated, okay, that I have demonstrated। Next we will be discussing about the k-means clustering, that we will be discussing in the next class। hope आप लोगों को clear हो गए, this is the okay, और कुछ भी डाउट हो, कुछ भी हो तो you can contact me। so that's all, thank you, all the best, bye and take care।